Hello everyone, welcome to the session. I am with Hridaya Mistry. So सबसे पहले thank you Hridaya for joining us. And in this session we are going to discuss with Hridaya कि उनका क्या strategy था, कैसे उन्होंने इतना अच्छा score लाया, that is 117 out of 150 in 3-year Maharashtra CET law. तो Hridaya सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या प्रोफाइल है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कैसे आपने ये स्कोर अचीव किया? Yes, sir. So, hi guys, I am Hridaya Mistry. I attempted 3-year CET law and my dream college is GLC. So, uske hisab se I started preparing that my goal should be getting into that college. And I took around 6 months for the preparation. So, I guess anyone who starts early will be at an advantage. And yeah, that's the gist of it. ओके सो आपका जो स्कोर है काफी अच्छा है. आई थिंक कितना रैंक है आपका? 239. ओके अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा और उसमें आपका रैंक 239 है, विच इज वेरी गुड. सो आपको कैसा लग रहा है और आपके घर वाले लोगों को कैसा लग रहा है ये स्कोर जो आपने अचीव किया है? वेरी प्लीज्ड, एवरीवन इज वेरी प्लीज्ड. वैसे घर से बिल्कुल प्रेशर नहीं था. एवरीवन was saying that they'll be satisfied with any score I get, so that was a relief. But looking at the score, I was even more happier. Okay, now I have a shot for the college that I aimed for. Okay, that's great. And he was in our morning batch, right? जो सुबह I think May में चालू हुआ था, right? Yes, so sir. how was your total overall experience? कैसा था lectures में? Teachers कैसे थे? Books कैसे थे? Test package कैसे थे? And आपकी क्या strategy थी? इसमें आप बताइए. एक्सपीरियंस ओवरऑल क्लासेस का बहुत अमेजिंग था. सारे लेक्चर्स टाइम टू टाइम शेड्यूल होते थे, प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड होते थे और टाइम पे खत्म भी होते थे. विद एवरीथिंग दैट इज टू बी कवर्ड इन द लेक्चर यूज्ड टू बी कवर्ड. ऑल द स्टडी मटेरियल वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल. उसमें से काफ़ी कुछ एग्जाम में आया भी. तो वो बुक्स जो मैंने आपके क्लासेस से गो थ्रू किए है उससे मुझे काफ़ी मदद मिली. दिस ईयर दे पुट मोर जीके इंस्टेड ऑफ current affairs. So there was a lot of that GK that was covered in the classes books. So that was a very big help for me. So very nice experience and I didn't have to stress. Everything went smoothly because जब start किया था तब I thought कि I am late. I should have started early. But the way classes covered everything with their pace, I was very pleased. Okay, that's great. And overall आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ते थे? Like what was your strategy? आप किस एरिया में किस टॉपिक पे आप ज्यादा समय स्पेंड करते थे? एक्सक्लूडिंग द क्लासेस मैं खुद से पढ़ाई करती थी. मिनिमम 2 to 3 hours. दैट इज अ मस्ट. एंड मैंने ज़्यादा फोकस लॉजिकल रीजनिंग पे स्टार्टिंग में दिया ताकि मेरे बेसिक्स कवर हो जाए. और करंट अफेयर्स में थोड़ा थोड़ा डेली तो इट्स लाइक यू फॉरगेट मोस्ट ऑफ इट, बट मंथ का एक बार रिविजन करती थी ताकि आई रिमेम्बर द मेन पॉइंट्स. एंड law legal reasoning I made sure that before going on to principle based questions I was cleared with all of the basic core topics, what they meant and everything. So the start was like that and later on I started doing revisions and stuff. Okay, that's great. And would you like to give any tips or strategy for the future aspirant जो लोग आने वाले समय में एग्जाम लिखेंगे? Sure. One thing that worked for me was focusing more at the initial stage, focusing more on the topics that I thought were going to be time consuming for me. So getting them cleared at the initial stage and making them a firm base was very helpful, and then covering the topics which I knew I could do in a very short span, keeping those for the last. And starting early is the best shot you've got. So please, for everyone who watches this, please start early. Okay, that's great. So thank you so much, Hridaya, for joining us and giving your sharing your experience and sharing tips with the future aspirants. Okay, and we wish you all the very best for your selection in GLC. Okay, so stay blessed. Thank you, sir. And thanks again for joining us. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks everyone for watching this video.